Welcome to the Ashtaang webinar. Am I audible and visible to everybody? Give me a thumbs up. Yes, you are visible and audible, both. Okay. So on the eve of Holi, what are we looking for? To win over? What are we trying to win over? हम किस चीज पे जीतना चाहते हैं? Do we want to win over our problems, our pain? Do we want some kind of pain relief? Yes or no? How many people are looking for pain relief? Okay, so I think only a few of you all require pain relief. Rest don't want to, it seems. Is it? Okay, तो pain relief के लिए क्या करना पड़ता है हमें? How many of us are interested to know how do we come out of this situation? कैसे हमें जीतना है अपने पेन के ऊपर? How many of us want to know? Let's make it a little more interactive. Pain spondylitis. Sunita Kumar Pandey ma'am says, okay. It's only Pooja ma'am who wants some relief, is it? Out of 64 participants, only Pooja ma'am? Or are there few more who want some relief from pain? कितने लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया? Allopathy, homeopathy, Ayurveda and so many other therapies and have not found any relief. और किस किस को permanent relief चाहिए? Fibromyalgia, yes, pain relief. Okay, तो क्या रीजन है कि ये हमारे younger generation तक पहुंच गया है? Even people in their 25-30s are suffering from these kind of pains. The knee pain, back pain, the most commonest of pains which was not seen in yesteryears. Can anybody tell me what is the reason for this? क्या रीजन है कि आज लोगों में इतना सफरिंग है जबकि हमारे पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बेस्ट ऑफ फूड है, सब कुछ तो बेस्ट है. सो व्हाई सो मच ऑफ सफरिंग? क्यों हमारे ग्रैंडफादर या फादर को इतना सफरिंग नहीं था? Why did they have a better life? Ooh, no joint pain. Ooh, no morning stiffness. Anybody? I'm sure everybody knows these answers. This is a very, very common answer. Okay, stress, lifestyle. Okay. So stress, lifestyle, yes. 21st century, we are into so many things. Chaos everywhere. पर हमें उन चीजों को हैंडल करना तो आना पड़ेगा. Yes or no? Disciplined life, Veena ma'am says. Excellent. डिसिप्लिन ही तो नहीं है हमारे लाइफ में. ओके, तो हम इन चीजों के ऊपर कैसे जीत सकते हैं ये आपको बताएगा अष्टांग चिकित्सा ऑन द ईव ऑफ होली. ओके, सो हाउ टू ब्रिंग बैक कलर टू आवर लाइव्स. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. जब हमको पेन होती है, तकलीफ होती है, तो दुनिया रंगीन होती है क्या? Do we have a colorful world? Yes or no? When we have pains and aches and we have to pop pill one after the other and still no relief. So let's see how we can come out of this pain. So if I have your permission, can you give me 2 minutes of your screen time so I could share the details as to how to come out of your pain? Do I have your permission? क्या आपको permission आप देंगे मुझे? Yes or no? Okay, just 2 minutes. I'll be sharing the screen. Okay, Anilji, can you see the screen? Yes. Okay. So Ashtaang Chikitsa online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. हम
आज इकट्ठे हुए हैं अष्टांग चिकित्सा के बारे में जानने के लिए. Online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. Okay, so Namaskar, I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. Who am I? I am Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. तो क्या करते हैं हम अवीसा में, आप सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, I'm sure. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems, यानी कि joint related problems, nervous system related problems, ये सब से आपको कैसे छुटकारा पाना है उसका हम उपाय बताएंगे. So now I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhu ji, a rare Kumbhak yogi and an human exponents expert. तो क्या करते हैं स्वामी राजविभू जी? He has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India but Europe and the USA as well. He has taken people out of chronic diseases जिसका allopathy में कोई इलाज नहीं है, like thyroid, BP, heart, diabetes and even life-threatening diseases like cancer, जो कितना तेजी से बढ़े जा रहा है, that everybody knows. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो जब हम structure के बारे में बात करते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं? What do we mean when we say structure of a human body? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That is our purpose, vision, and mission at Avisa Healing. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So, ये webinar किसके लिए है? Exactly who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments. हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हमें कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, थोड़े दिन तक ठीक रहता है. Again we are back to square one. We don't want these kind of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution जिसका कोई भी side effect हमें आगे की जिंदगी में नहीं झेलना पड़े. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. तो mind you, आपको अपने health का charge अपने हाथों में लेना है. No external intervention. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa, freedom from pain and medicines. So balancing of body at 8 levels. तो जो हमारा बॉडी है 8 सॉफ्टवेयर्स में ये हमें काम करना है. तो कौन सी है ये 8 शरीर जिसके बारे में स्वामी राजविभू जी आपको और डिटेल में बताएंगे. सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर. I think most of us must have heard about something called marma points. Okay, so प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति and the विकृति शरीर. अभी ये दोनों जो शरीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, when we talk about neuromusculoskeletal problems, it's the degeneration and the regeneration where the imbalance has happened. यानी कि degeneration is happening at a faster pace, regeneration is happening at a very very slow rate. तो उसमें होता क्या है? imbalances create हो रहा है और आपको pain हो रही है and lot of suffering. So what are the common problems that people
of today are facing, be it young, be it old. Knee pain. आज घर घर की प्रॉब्लम है, knee pain, lower back pain. Hip issues, pain in the leg. Drop foot, spine related issues. Slip disc bulge and weak spine. Spondylitis, frozen shoulder. जो आगे के जमाने में 60+ लोगों को होता था, वो आज पाया गया है कि even people in their 40s or lesser than that are suffering from. Tennis elbow, rheumatoid arthritis. Osteoarthritis, one of the degenerative diseases. Osteoporosis, dislocation. Neuropathy and nerve issues. So let's hear from Swami Rajvibhu about Ashtaang Chikitsa and how to come out of your problems. Thank you so much for listening to me patiently. अभी आप सुनेंगे स्वामी राजविभू जी से कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. So I'll just tell you the sequence of the webinar. You will be listening to the recorded session of Swami Rajvibhu ji. After that, we will have somebody who is doing the Ashtaang Chikitsa course and he will talk about his journey. Then we will share the program details, and last but not the least, Swami Rajvibhu ji himself will be present live to answer all your questions in details. So it's a request, if you can please write in the chat box your name, number, and your problems. We will take them up lastly in the session when Swami Rajvibhu ji himself is going to join us live. Thank you so much. Over to Anil ji. Please share the screen. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और अ स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था. रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो,
वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। इफ योर लिवर गेट्स इंपैक्टेड, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। सो योर प्रॉब्लम विल रिमेन अनडायग्नोस्ड। यूजुअली दीज डायग्नोसिस आर नॉट डन। तो इन्फ्लेमेशन क्यों है? यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इशू विथ डाइजेशन। नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम, हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बाय टेकिंग कैल्शियम? नॉट इवन अ सिंगल एग्जांपल। एक भी एग्जांपल नहीं है। रादर, डू यू नो इफ यू टेक लॉन्ग टर्म कैल्शियम, द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल इंक्रीज बाय 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा टू द एक्सट्रीम व्हाट द डॉक्टर विल से, डू अ नी रिप्लेसमेंट, अपने घुटने बदलवा लीजिए. सो व्हाट डज इट मीन? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रीटमेंट. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड. ये ठीक हो ही नहीं सकता. सो आई वुड टेल यू टू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? डिड दे हैव प्रॉब्लम एट दिस एज? नो. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल.
ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. एंड जस्ट अ लिटिल बिट, इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikrati. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, दे वेयर ऑफ. दिस इज वेयरिंग ऑफ इज कॉल्ड एज विकृति एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रकृति. राइट? ये दो चीज हमेशा चल रही है. देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So
ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना. So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है.
Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें. Just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार, density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग-अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapta Dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग-अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना?
It has also a relation with liver. What is kidney disease? Or kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside.
and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? Aapka heart, aapke muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. कट से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma, Ashtaang Chikitsa में, there is a part in Ashtaang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? तो function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata.
Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is neuro degeneration, degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. A 64-65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin.
So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking about genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are
You are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट, यस और नो? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called udana. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it udana. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak Therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikrati, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी
your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji. I hope we have understood how to take charge of our health. Yes or no? थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाए कि हम लोग एक बीमारी से, पेन से, स्टिफनेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं. So now to give you more insight on Ashtaang Chikitsa, I would request Jaswanti ma'am to please talk about her journey. Jaswanti ma'am, over to you. I just put you on spotlight. Jaswanti ma'am, can you hear me? हाँ, थैंक यू मैडम. मैं भुवनेश्वर के, उड़ीसा से भुवनेश्वर से हूँ. मैडम मेरा नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जॉइंट में. अभी फरवरी 10 में मैं फरवरी 10 में मैं ज्वाइन की हूँ अभी अष्टांग चिकित्सा में. और अभी मुझे ये सब प्रयास करने के बाद बहुत एनर्जेटिक फील होता है. और नी में जितना मैंने फोल्ड नहीं कर पाती थी नी को, ये फोल्ड करके जब मैं 30% ओके हो गया है मेरा नी से. Okay. अच्छा लगता है. Achha. Thank you so much, Jaswanti ma'am, for joining us. Now I would like to request Anilji to please share the program details. Yes, just give me 2 seconds. Rashnaji, are you able to see my screen? Yes. Okay, so let's get to know the details of the program. Rashnaji, there's some disturbance. Can you mute? I think it's Jaswanti ma'am. Yes. नहीं मैडम, सब ठीक है. Yes, I've muted everybody. Okay. So, are you able to hear me? Yes. Right. So we'll very fast let you know about the online program details. First of all, it's a guided program conducted online by Kumbhak mentors, and this happens on a Zoom app. There are 3 modules in the whole program: Module 1, Module 2, and Module 3. And duration of each module is 21 days. We'll talk about this in greater detail in a short while from now. Program view. The duration is 10 weeks. Actually, the 9 weeks is for the therapy, and then we have 1 week for the customization of the therapy. What is customization? We'll talk about that also. Every week, there are 2 live classes. Week 1 is a learning class plus there's a learning class plus a mentoring class every week. And you'll also get videos and written instructions, so you do not have to worry about any missed sessions. What are the next steps? You pay the fee of the program, and we have a special webinar pricing. And then you provide your details so that we can create your login credential for course access. And what it is, we'll talk about this also. And then you start the program with module 1, then module 2, and then module 3. Total classes in module 1, there'll be 6 classes, 3 learning classes, 3 mentoring classes. So 21 days. Same goes for module 2, same goes for module 3, 6 classes. So total 18 classes plus 2 classes for the customized practices.
and total engagement becomes 10 weeks. The class start date for the 72nd batch will be starting a 72nd batch on 21st March, which is Monday at 7 p.m. After that, the module 2 will start on 12th April on Tuesday at 7 p.m. Then module 3, 4th May on Wednesday at 7 p.m. Ultimately, you will be completing all 3 modules one by one. Mentor classes or the practice classes. For module 1, mentor classes are on Thursdays. For module 2, mentor classes are on Fridays. For module 3, mentor classes are on Saturdays. And we'll provide all these details in the chat as well as in the WhatsApp group also. You don't have to remember. What is the class experience like? These are live sessions where mentors watch all the participants so that they can correct them if the participants are not doing the kriyas correctly. Then you get written instructions, and then you get session recordings also. All the classes are recorded. So even if you miss a class, you don't have to worry. You'll get the recording. All participants get a recording. Then there are a lot of extras that you get, like mental practices. The Swamiji will give you a unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective. In what season, what to eat, why to eat, what to eat. Simple detox processes will be there. Then, and a lot of knowledge is shared by Swamiji during all these sessions and during the question answer session that we have with Swamiji. Before I come to the program fee, let's look at how much we could be spending just to manage our disease. I've written some numbers here. They may be lower or higher depending on the city where you reside. Doctor fee, you could be paying anywhere between 6,000 to 12,000. If you're into physiotherapy, you could be paying 12,000 to 30,000, again based on the city of your residence. And then medicines could be costing you 15,000 to 30,000. So if you total all this, 33,000 to 72,000 per year, we could be spending just to maintain the disease, not cure it. And why this is important? Because you'll be spending your you're already spending your hard-earned money. And why this program will make sense to you if it can be provided to you at a very, very economical price so that most of the people can afford this. Now, one thing, again, I'd like to talk about is who this program is not for. That needs to be understood. So that's its clarity between you and us. Who is this program not for? It's not for people who are looking for a magic pill and want fast results. Because Kumbhak therapy, it will take some time. This is not for those who are not ready to work on their body. It's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. And this is not for those who are impatient with themselves or others. Everything needs patience. This therapy will need patience too. It's not for those who are looking for free treatment, because this is a paid program. Our mentors, they're spending a lot of time with you, guiding you at each step of the way, hand holding, step by step. Now, what all you get in the program? Prana Shakti diagnosis for root cause determination. I'd like to talk about this diagnosis. This is the non-medical diagnosis in which you'll be asked to do some experiments on your breath and your emotion. And along with that, you'll be asked to upload a selfie photograph without spectacles and for ladies without makeup. So when these two things go to Swamiji, he is able to know which force has become weak inside your body due to which you landed into your current situation, your health issue. This is the key to Ashtaang Chikitsa, because once you know the cause, then a treatment is possible. Otherwise, it will be a pure guess. That's all. Like what most of the treatments in the market today are. Weekly, there'll be one main class of 60 to 90 minutes duration. And these are live sessions. And the third thing that you'll be getting is the weekly one practice class of 60 to 90 minutes duration. And this is the mentors class, which I talked about. Mentors will be watching you and guiding you and correcting you there and then. Online course access for 1 year. Like I said, you'll get all the recordings of all the classes inside a special course dashboard. And you'll get an app also, which you can download onto your mobile. This course access will remain with you for complete 1 year. Even after the 9 weeks are over,
the recordings remain with you for 1 year. So there's no problem whatsoever. Videos of all kriyas separately. The last point was that you get the class recording, which will include people asking questions, clarifying their doubt. But this is about the videos of all kriyas separately, so that you can save time. Maybe you don't want to watch the whole class recording. So just watch the kriya, the recording, the video of the kriya, and just go ahead with your daily kriyas. Then you'll get written instructions, which you can download, and you can do your kriyas just from the written instructions. Because many people, they do not want to watch the video, but for them, written instructions are much convenient and better. So that are also provided to you. Seventh thing that you get inside the program is the private WhatsApp group, where you ask your doubts, questions. See, this is the most important. This is the place where all the action happens during this 9 weeks. This is the group where all the links will be shared of the upcoming classes. This is the group where you'll be asking doubts. Like for 2 days in a week, you'll be live with us. But on the remaining 5 days, if you got any doubt when you're practicing alone, where do you go? This is where you go. You go inside this WhatsApp group, type your question, your doubt, and our mentors will answer that for you. Individual participant progress tracking. We track each participant's progress on a daily basis. You'll get a form to fill up where you'll be putting in how your kriyas went that day. Did you practice or not? Why you didn't practice, and how you're feeling. If you're facing any problem doing kriyas, if you're facing any problem understanding a kriya, so we track that on a daily basis. Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is magic. Like the Prana Shakti diagnosis that I talked about, that is taken into consideration to customize each participant's therapy. Each participant, the root cause of the disease in each participant would be different. So the therapy would be customized as per that root cause, which means that after your therapy is customized, the recovery is faster because you're targeting the root cause of the disease. And one by one, all the problems related to that weak force inside your body, which is determined through the Prana Shakti diagnosis form, that will be on a fast path to recovery. The 10th point, old students group. We keep in touch even after the program is over, which means that after the 10 weeks are over, you'll be shifted to the old student group where you'll be able to ask questions, your doubts, everything. This is the only program on the planet which keeps its participants with them. They're able to ask questions for lifetime, unless you don't want to stay with us. That's a different matter, but you'll still get support after the program is over, even after the program is over. So all the 10 things that I've listed here, these are here for you, and we'll share this in the WhatsApp group also. Now let's come to how much your investment would be in this program. This requires a commitment from your side in terms of finances, in terms of your time, in terms of your discipline. So the program fee for Ashtaang Chikitsa, including everything that I've listed, all the 10 points that I've listed, just for 9,500. And I've done a little math here, just so that you understand how much it's costing you per class. 10 weeks program, 20 classes. If you divide 9,500 by 20 classes, it costs 475 rupees per class, which is of 60 to 90 minutes duration. And plus you get all the 10 things that you get: Prana Shakti diagnosis, therapy customization, videos, course access, everything. Step-by-step hand-holding in the WhatsApp group. But wait, there's a special webinar pricing, because you patiently heard so much. You are here. Many people have left, but for people who stayed back, there's some good news for you. Instead of the 9,500, the price is just 5,500 only. And this price
If I divide this by 20 classes again, it comes to just 275 rupees per class. The calculation is important because you need to understand what all you're getting in such a economical package, along with all the benefits of the therapy that you get. How to enroll? You pay the program fee and you post the payment receipt in the WhatsApp group. Then you submit your details so that we can create course access for you. And then you join the first module and start attending classes. This is the payment method. We'll share it in the WhatsApp group as well as in the chat also. Now here I'd like to stop for a moment and talk about the support team. See, we understand that this is an online course. This is an online program. When we say online program and how you can, cure people through this, we understand that because till now we've been used to face-to-face interaction, but due to COVID, we've all been forced to go online. And the therapy, the Ashtaang Chikitsa therapy, that's why we've gathered together a team of people who can support you each step of the way. Then we have Rachna Shrimal Botra, she's the program director and she's the host of the webinar. We have Shalini Bhagwat, she takes care of all the classes. Then Atul Sharma, he's one of the mentors. Pooja, another mentor. Ranjana Swain, another mentor. Neha Upadhyay, she's in charge of enrollments. After this webinar, you'll be interacting with her regarding the program details, payment details, everything. Anil Chauhan, that's me. I'll be answering most of your questions inside the WhatsApp group. And then we have Himanshu Reddy. He takes care of all the technical stuff. He takes care of your login ID and passwords. If your video is not playing, he is the person that will be, getting help from. If your written instructions are not downloading, he is the person that will be, getting help from. If your app is not working, he is the person that you'll be getting help from. See, the complete team is there. The team is required because we understand that it's the online thing. It won't be easy for everyone. So that's why you need hand-holding, and there's a special person designated to a special part of the program. So that's what I want to impress upon you, that you'll be in safe hands, you'll be supported step by step. You won't be, feeling lost that what to do, who to talk to and everything. And with this, I come to the end of my part. I'll hand over the presentation back to Rachna ji. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now for the last part of the webinar, but the much awaited part, the question and answer session. So some people have already written certain questions. So Swami Rajvibhu has joined us already. So I'll just put him on spotlight. Namaste, Swamiji. Good evening. So we'll take up the questions one by one. Okay. Okay, Anuradha ma'am writes, myself, Anuradha, I have degeneration of spine and rheumatic arthritis. So degeneration of spine. Degeneration is something which is pretty common at this point of time. आजकल लोगों के लिए degeneration बहुत common factor है. So degeneration of spine. How regeneration happens? Who does regeneration? This is the question you must ask. ये सवाल आपको पूछना चाहिए. Regeneration कौन करता? So there is a regenerative strength of your body. आपके शरीर का regeneration का strength है, शक्ति है. वो weak हो गया तो degeneration होगा. Degeneration आप रोक नहीं सकते. अगर regeneration ये आपकी शक्ति. That is why degeneration happen in some people faster, in other people not that fast. So आपकी ये regeneration की strength कम हो गई. पहली बात तो ये. So ये regeneration strength क्यों कम होगा? And for the whole humanity, this regeneration strength has gone down. अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरी humanity का ही क्यों कम हो गया.
So if you move through a smoke area which is full of smoke and pollution, ना कहीं धुआं ज्यादा है, आप उस एरिया से गुजरते हैं, you inhale less or more? आप सांस कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं? आप सांस कम लेते हैं. You inhale less, isn't it? You stop your inhalation rather. Your inhalation factor or the strength of inhalation is responsible for regeneration in your body. Now tell me, have we polluted the environment? क्या हमने environment को pollute कर दिया? Pollution कर दिया environment का? हाँ या ना? 100% कर दिया है. तो आपका शरीर inhale कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? Are you inhaling less or more? You are automatically, your body is inhaling less. So degeneration is more in this era. इस जमाने में degeneration बहुत ज्यादा है. Now, when you get into some kind of fear, do you inhale less or more? डर लगता है तो सांस कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं. हॉरर मूवी देखते हैं तो सांस कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं. डर लगता है तो you stop your breath. You don't inhale. Anxiety, fear is common in this time. Yes or no? The moment you watch a news channel, हो गया शुरू anxiety and fear. Unknown things create anxiety in your system and fear in your system. When a student goes to school, he or she doesn't know why he is studying that. You have also studied a plus b whole square is equals to a square plus b square plus b. How much you have used it in your life? No. So if you do something which is not related to your life, you get into some kind of an anxiety and you inhale less. You go to a corporate and work there, you inhale less. So we have created a culture of degeneration. Yes or no? The moment you eat a genetically modified food, and everything is genetically modified, let me tell you, your body gets into some kind of fear. Why? Because that is body senses that is not your food. आपको तो नहीं समझ में आता. You put all the masalas and cover the taste of that, but body knows this is not your food. So body goes into some kind of fear, and inflammation happens in your body. Inflammation hota, degeneration happens. Second factor for degeneration can be alignment of your body. There are three basic alignments that you need. It is your navel, chest and thighs. इसको नाभि, कौड़ी, नले कहते हैं. In local terms, in Indian terminology, this is called as नाभि, कौड़ी, नले. Your digestion will not be proper if your naභi is not aligned. Your heart and respiratory system will not be proper if your kaudi is not aligned, chest is not aligned. And the strength of your body will not be proper if your thighs are not aligned. So if these three alignments are needed, if your thighs are not aligned, your spine will not be aligned. So we are losing the alignment of the body and thereby we are losing the strength of certain organ. Spine ki strength kamari, what will happen? Degeneration is happening. Apart from that, it is not aligned. So slip disc, gaps in between two joints, degeneration. And because of disalignment, some nerve gets compressed. ये सब हो रहा है ना? This is what is happening. Your absorption is coming down because the digestion factor is not proper. You are taking in chemical medicines which create inflammation in your body. Painkiller लेते तो inflammation हो जाता body. Inflammation होता, inflammation happens, then what? Metabolism doesn't happen properly. Pain factor increases in your body. Absorption suffers. Absorption कम होगा तो what will happen? Calcium deficiency, nutrient deficiency, no regeneration again. Vicious cycle है ना? Degeneration
And everything that happens, again, more degeneration, and that is how we are going ahead. So what you need to do, will medicine cure you? It will never cure you. It will create difficulty. Maybe with a painkiller, you get a pain relief for 2 or 3 hours maximum. But it increases the problem of your body. So what have we lost? Just get it clear. What have you lost because you are getting into problem? What have you lost? Certain strength of your body, certain factors of your body, your metabolism, your absorption, the strength of liver function, the strength of alignment. So that is why we have explained there are 8 different levels of your body and there are 6 basic strengths of your body. Dehabal, Doshabal, Agnibal, Dhatubal, Manobal, Ojasbal. 6 basic strengths of your body. And if you do a little permutation on combination, 8, 6 are 48. There are 48 different factors in your body. Double it in an increasing strength or decreasing strength, it becomes 96. 96. There are 96 factors of your body which create this body. If you measure your body with your finger width, it has to be 96 finger width. Plus your aura goes 12 finger width out, 6 up, 6 down. How many? 96 plus 12, 108. You know this number. Very important in our culture. It is the number. It is the geometry of your body. Don't think it otherwise. This is the geometry of your body. So unless and until you increase those factors, the strength of your body, nothing is going to happen. It will not increase through your what you call as exercise regime. You know Shane Warne, just few days back he died of a heart attack. The most fittest of sports person. So if you work upon the external body, it will not help the internal organs to that extent. For helping your internal organs, for increasing the strength of your liver, heart, kidney, lung, and other functions, you need to work inside. What is the tool to work inside your body? Kumbhak is the only tool which can reach to your organ. There is no other method. So at this point of time, it is important. The Ashtaang Chikitsa has Kumbhak as the key. The whole Ashtaang Chikitsa has Kumbhak as the key, where we are not just impacting the external body, we are impacting the internal organs and the factors which create the strength of those organs and the strength of function in the body. So at this point of time, it is important that you work upon the body. See, for the last 100 years, we have done chemical farming, isn't it? Using fertilizers and pesticides. Now the land has got barren. Zameen kharab ho gayi na, खाद इस्तेमाल करके. तो कहते हैं what we are saying now, organic farming, जैविक खेती करो. ये बॉडी का जैविक खेती कब शुरू करोगे? How many chemical bombs you have put in this body? The moment you were born, how many vaccines? And then how many medicines you would have taken in your life? That is why this is the state. इसका organic farming कब शुरू करें? When will you start the organic farming? But removing the medicine will not help unless until you build the basic functionality and strength of the system. So working upon the body is very important. Rest of the thing is you can't avoid those things. So whatever you are pushed into, it's okay, but at least work upon this body. Okay, Roma Bhalla says, I've had lumbar spine and cervical spine surgery. My muscles are very tight and muscle mass in my legs is depleting. How to build it? My back doesn't hold me upright. Okay, I'll give you an example and make you understand how you can build it. Okay, I'll give you an example. I'll give you two different examples, and you can do this experiment by yourself. See, reading something, and if it suits your logic, it will not bring solution. Let me tell you categorically. If you think this suits the logic, it doesn't create solution. Otherwise, logic से तो 100 साल में हमको healthy होना चाहिए था ना.
with the growth of medical science, we should be healthy. नहीं है ना healthy हम. That means those straight jacket logic doesn't create solution. We are missing something. So what you do, pick up a 2-liter water bottle or some soda bottle, है ना, 2 लीटर का bottle होता है ना, घर पे लेके आओ. Now with your right hand, just do a little dumbbell kind of a thing, है ना, pull up, थोड़ा उठाओ उसको, ऐसे ऐसे करके उठाओ 100 times every day. After 2 weeks, what will you see? Your right hand will become a little more strong. You'll see a little growth of muscles in your right hand. होगा ना? That is how bodybuilders do build their muscles. Yes or no? So what does it mean? Regeneration happened. Regeneration हो गया ना? How? कैसे हुआ? How did regeneration happen? Because you lifted that weight. But how did you lift that weight? By holding your breath. How do you lift weight? By holding your breath. Can you lift weight without holding your breath? No, you can't do that. Do a little experiment. अपने घर में experiment करो. कोई weight उठा के देखो, देखो कैसे उठाते हैं. You hold your breath. By holding the breath, and because you were lifting it with the right hand, you gave a direction or a trigger to the muscles of your right hand. Because you are using muscles to lift that weight. तो muscles पे breath hold का trigger चला गया, muscles became regenerated. If you direct your breath hold towards any organ, that organ will regenerate. Yes or no? मैं तो आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ. Do experiment and see. So first thing, regeneration can happen. ये बात तो आपको समझ में आ गया. So regeneration can happen. 100% it can happen. Now, if there is a stiffness in a particular area, a particular joint, what you do? I'll tell you a little experiment to do. एक experiment करने के लिए बोल रहा हूँ आप. Now, suppose your right shoulder is more stiff. Yeah, or otherwise also you can do. Your right shoulder is more stiff. तो ऐसे करो, create a tension here. यहाँ पे एक tension create करें. ऐसे करके ना, just create a little tension. Inhale and hold. And create more tension here. सांस लेके रोक लेना और इसको और टाइट कर देना. इसको टाइट कर दो. Hold it till your capacity. जितना आपका capacity है उतना टाइट कर. Do it 12-16 times. 10 से ज्यादा करो इसको. Right? Do it every day for 3 days. You'll see वो stiffness गायब हो जाएगा. It is as simple as this. ये इतना simple है. If you do Kumbha through Ashtaang Chikitsa, you will see आप कितना भी योगा कर रहे थे पहले. Now then, after doing Ashtaang Chikitsa, you do the yoga regime, whatever you were, if you were doing earlier. आप देखोगे आप ज्यादा flexible हो. You would do it much easily. So what does it suggest? ये क्या suggest कर रहा है? First of all, wherever stiffness has happened, it will go through this. इससे निकल जाएगा. Second thing, regeneration will happen. Isn't this a solution? मैं आपको कोई गोली खाने के लिए बता दूं, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है ना. रिजेनरेशन तो नहीं होने वाला. The body strength will not come back with whatever food you eat. Whatever food you eat. कैल्शियम खा के किसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ? Give me one example. पेन किलर से किसका आर्थराइटिस ठीक हुआ? Give me one example. ऑस्टियो एंड रूमेटॉइड, अदर रूमेटॉइड में किसका ठीक हुआ? रूमेटॉइड किसी का भी नहीं हुआ. So I'm giving you solutions. That too you can do an experiment and then come to this conclusion. We have examples also. हमारे पास तो बहुत example. So if there is a heart patient, what is the strength a heart patient has lost? It is called as Dakshinagni. I'm not talking a technical term here because the whole world has been कहते हैं ना, उनको ट्रेन किया गया है. मेडिकल साइंस का जो अपना टर्मिनोलॉजी ना उसमें ट्रेन किया. तो आपको मालूम भी नहीं है ये टेक्निकल टर्म्स जो मैं बोल रहा हूं. इसीलिए आई एम यूजिंग लेस एंड लेस, गिविंग यू more and more experiment to do and find out for yourself. It is called as Dakshinagni. Heart functions with a strength called Dakshinagni. Now Dakshinagni can be related to you in many ways. One of the way in which you can test your Dakshinagni
is by checking how much you can hold your breath. अगर आपको अपने अंदर पता करना है कि आपके अंदर दक्षिणाग्नि कितनी कम है या ज्यादा है, तो यू होल्ड योर ब्रेथ, यू जस्ट टेस्ट योर होल्डिंग कैपेसिटी. आपको पता चल जाएगा कि आपकी दक्षिणाग्नि कम है कि ज्यादा है. सो व्हाट हैव यू लॉस्ट इफ यू हैव गॉट इनटू हार्ट डिजीज? क्या लूज कर दिया आपने? दक्षिणाग्नि. देन इन रिलेटेबल टर्म्स व्हाट? द एबिलिटी टू होल्ड ब्रेथ. तो किससे ठीक होगा वो? आप मुझे बताएं ना, यू टेल मी, किससे ठीक होगा? बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ होल्डिंग ब्रेथ. एंड हाउ विल यू डू दैट? बाय स्लोली इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ होल्डिंग योर ब्रेथ. धीरे धीरे करके इसी से ठीक होगा. देयर इज नो अदर वे. मुझे और कोई तरीका लाके बता दीजिए आप. दुनिया में हार्ट डिजीज से निकलने का कोई एक तरीका मुझे लाके बता दो. इफ इट इज नॉट दैट मच ऑफ, ज्यादातर लोगों को तो टैग किया जाता है. इफ इट इज नॉट दैट मच प्रॉब्लम, इफ यू जस्ट करेक्ट योर लाइफस्टाइल, आपका शरीर रिकवर कर जाता है. बिकॉज योर बॉडी हैज दैट रिकवरी मैकेनिज्म. कोई और आपको ठीक नहीं करता, आपका शरीर ठीक करता. तो नैरेटिव को थोड़ा चेंज कीजिए. उन लोगों ने जो नैरेटिव बनाया ना सेल करने के लिए, अपने आप बेचने के लिए, उसको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा. यू आर ऑल वाइज पीपल. आप समझदार लोग हैं ना. क्यों समझदार लोग हैं? एक पहली बात तो आप इंडिया में पैदा हुए, तो आप बचपन से ही समझदार हैं. प्रॉब्लम क्या है? यू आर एजुकेटेड. प्रॉब्लम क्या है? यू आर एजुकेटेड. सो इफ यू कम आउट ऑफ दैट, क्या कहते हैं, दैट स्लेवरी ऑफ व्हाट you have trained into, you know what you have lost. Your body can recover. आपको भी पता चलेगा कि कैसे recover, because your body is a recovery mechanism. No medicine recovers you. आपको rejuvenate कोई medicine नहीं करता, ठीक कोई medicine नहीं करता. Natural or chemical, I am talking about both. It is the strength of your body which recovers. उसको आप बनाएंगे तो निकल जाएंगे. तो हार्ट डिजीज से निकलने का क्या तरीका? ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट दिस स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड. आई कैन ऑल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, बट एक रिलेटेबल टर्म को पकड़ रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मैं और भी चीजें बता सकता हूं. देयर आर 6 बेसिक स्ट्रेंथ्स आई टॉक्ड अबाउट. सो वन ऑफ देम इज, आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट फंक्शन, इज दक्षिणाग्नि. दक्षिणाग्नि आपके, और ये दो चीजों को मिला के बना है. दिस इज मनोबल एंड अग्निबल. मनोबल और अग्निबल का मतलब एक तरीके से गठजोड़ है. दिस इज कॉल्ड एज दक्षिण. सो दक्षिणाग्नि अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका हार्ट ठीक हो जाएगा. एंड व्हाट इज दैट? द होल्डिंग कैपेसिटी. और वो तो होल्ड करके ही बढ़ाएंगे ना. चलने की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? बेड पे बैठ के चल के बढ़ाएंगे. चल के ही बढ़ाएंगे ना. चलना भी अगर आपको बंद करवा दिया जाए तो गॉन, सम एवरीथिंग गॉन. सो बेड रेस्ट से ना इंसान ठीक नहीं होता, सही काम करने से ठीक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्नेहा लालवानी मैम राइट्स, क्या हर पर्सन कुंभक कर सकते हैं? आप कर ही रहे हैं. आप कर ही रहे हैं. आप चलते नहीं है क्या? उठते बैठते नहीं है क्या? आप काम नहीं करते क्या? पीछे देखो ना, सीढ़ी चढ़ने पे के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है आपको? आप अलग अलग प्रोपोर्शन में सांस रोक के ही अपने लिम्स को हिलाते हैं. यार आपका जो वर्किंग का तरीका है ना, रेगुलेशन है, वो ब्रेथ होल्ड से ही होता है. उसके बगैर तो आप कर ही नहीं. कुंभक के बगैर आप लाइफ जी नहीं सकते. तो क्या आप नहीं होल्ड कर रहे हैं? आप तो कर ही रहे हैं. वो कैपेसिटी कम हो गई है ना, तो उसको बढ़ाना कैसे है वो हम बता रहे हैं आपको. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे, आप कर ही रहे हैं. ये आपके बॉडी का ही मैकेनिज्म है. कोई मैं ये टर्म अलग से मैं ढूंढ के भी नहीं लाया. हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस पे काम किया था. इसीलिए आई हैव केप्ट दिस नेम कुंभक. व्हाई? क्योंकि उनकी इज्जत करने के लिए, जिन्होंने इतना सोचा, जिन्होंने इस पे इतना काम किया, वो हमारे बाप दादा से. वो जो पहले योगी, ऋषि, मुनि, सिद्ध थे, वो कौन है? हमारे बाप दादा तो है.
उन्होंने इस पे बहुत काम किया, मगर वो सब खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया। हाँ, इट इज जस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट टू रिवाइव द होल साइंस। तो ये साइंस जो है, ये आपके शरीर का ही साइंस है, ये लाइफ का ही साइंस है। पूरा एलोपैथी मटेरियल एक्सचेंज पढ़ाई करता है आपके बॉडी में, एनर्जी एक्सचेंज क्यों पढ़ाई नहीं करता? जिसकी वजह से मटेरियल एक्सचेंज होता, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। देखो, वो हमसे ही साइंस चुरा के ले गए हैं, उन लोग को इतना नहीं समझ में आने वाला। 100 साल में बर्बाद कर दिया ना सब कुछ, हवा खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, जमीन खराब कर दी, इंसान खराब कर दिया, स्पेस खराब कर दिया, क्योंकि जो चुराई हुई चीजें हजम नहीं होती। हमारे देश में कहावत है ना, चुराई हुई चीज हजम नहीं होती। तो आप जिसे साइंस कह रहे हैं, उसमें साइंस जैसा कुछ है नहीं। आपको लगता है कि साइंस कह रहे हैं, किसी ऑब्जर्वेशन को साइंस नहीं कह सकते आप। बच्चा भी ऑब्जर्व करता है, लाल चीज को देख के लाल बोलोगे तो ये क्या साइंस है? वो मशीन से आपके शरीर में देख के बोलते हैं ये देखो ये है, ये देखो ये है। ठीक कहां होता है साहब? ठीक तो करो। देख देख के बोल रहे हो ये देखो ये इंसान लाल है, ये पीला है। अरे ये कोई साइंस है? तो आपको तो दिमाग खोलो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग सब इंडियंस हो, भारतीय हो ना आप वैसे ही जन्म से ही बुद्धिमान हो। प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़े लिखे हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आप वही तरीके से सोच रहे हो। तो देखिए, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, सारी डिजीज बढ़ गई ना। डायबिटीज बढ़ गया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज बढ़ गया, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, थायराइड देखो कितना एपिडेमिक हो गया है ना। मेंटल इश्यूज तो बच्चों बच्चों में आ गया है। फिजिकल इश्यूज देख लो, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हर जगह पे आ रहा है। कहीं तो हमको सोचना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम हो रही है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब सोचेंगे। कहीं तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं, कोई भी तो बीमारी नहीं कम हो रही। क्या तब सोचेंगे जब हम सभी के घर में ये सब चीजें आ जाएंगी? आप आस पड़ोस में देखो कितना कैंसर फैल रहा है, तो कब सोचेंगे? कभी तो सोचना पड़ेगा। कौन ठीक करता है आपको? वापस आ जाइए, कौन ठीक करता है आपको? आपका शरीर ठीक करता है। आपके शरीर में क्या है जो जिससे ठीक होता है? ऐसे बहुत सारे फोर्स और फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं आपके शरीर के। तो ठीक कैसे होंगे? उनको बढ़ाएंगे तो ठीक होंगे। तो बढ़ाएंगे कैसे? एक कोर मैकेनिज्म है, उसे कुंभक, चाबी वही है, वो उसके बगैर नहीं होगा। तो वही चाबी लेके वी आर डूइंग थिंग्स। मर्म विन्यास हम करा रहे हैं, आपको हठ विन्यास करवा रहे हैं, कुंभक थेरेपी क्या हो रहा है। तीनों में कोर क्या है, कुंजी क्या है, चाबी क्या है? वो कुंभक है। और वो आपकी लाइफ में भी वही चाबी है, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग है। आप जितना अच्छा जी पाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कुंभक की कैपेसिटी क्या है। तो कुछ अलग से नहीं है, ये आपका मैकेनिज्म है ही। आप रोज सुबह से शाम तक यही काम कर, केवल वो स्ट्रेंथ उस चीज को करने की कमजोर होगी, हम उसको बिल्डअप करेंगे और आप देखेंगे चमत्कारी लाभ होगा। देखो, देर इज नथिंग कॉल्ड एज मैजिकल पिल, आज तक तो नहीं आया। देर इज नथिंग कॉल्ड एज मैजिकल इंटरवेंशन। किसी सर्जरी से कौन ठीक हो गया? घुटने बदलवा के कौन ठीक हो गया? बताओ, किसकी लाइफ अच्छी हो गई? तो बट योर बॉडी इज मैजिक, आपका शरीर मैजिक है। यू सपोर्ट इट, आप इसको सपोर्ट कीजिए, किसी भी चीज से निकाल देगा, किसी भी चीज से निकाल देगा, मगर इस पे काम करना पड़ेगा। ये मान के चलिए, कमिटेड होना पड़ेगा। जीवन अच्छा करना है तो इसके लिए थोड़ा कमिटमेंट चाहिए। नेक्स्ट। Okay, Ritu Sharma ma'am writes spinal stenosis and lumbar spine problem. Got epidural injection last year. Has major surgery हाँ, मैं of health condition, which is मैं at आपको ये टेक्निकल टर्म्स को ना इजी करके बताता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। कार्बोहाइड्रेट किसने देखा? किसने देखा है कार्बोहाइड्रेट? किसी ने नहीं देखा। अच्छा, आपके बॉडी ने कब बोला कि आई नीड 100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट? कब बोला आपके बॉडी ने? मुझे 100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बोला कभी आपके बॉडी ने? नहीं, आपके बॉडी को समझ में नहीं आता व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट।
आपके बॉडी को समझ में नहीं आता कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपको समझ में नहीं आता कार्बोहाइड्रेट क्या है, मगर भाषा देखिए वही भाषा बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता। कमाल का डेवलपमेंट है ना? एलियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, ना मेरे शरीर को समझ में आता ना मुझे समझ में आता। बुद्धिमानी इसी में, यही भाषा बोलने में जो किसी को नहीं समझ में आता, यही है ना? मतलब कैसा, कहां पे आ गए हम? वेयर हैव वी लैंडेड? फिरंगियों की तरह बेवकूफ बन गए हम। बेवकूफ कौम है पूरी की पूरी, फिरंगी कौम। उनको फॉलो करते करते हम भी बेवकूफ बन गए। आपका शरीर क्या बोलता है? अरे मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। हर जानवर को मालूम है उसकी दवाई क्या है। आप केवल शरीर की भी सुन लेना, गो टुवर्ड्स नेचर। चॉकलेट देने की जगह मीठा खाने का मन करे तो कुछ मीठा फल दें, आपका शरीर ठीक कर लेगा अपने आप। आप शरीर की भाषा ही नहीं बोल रहे। जब वो फीवर करता है कोरोना के टाइम पीरियड में, तो आप क्या करते हैं? फीवर डाउन कर देते हैं, करते हैं ना? करते हैं ना फीवर डाउन। शरीर तो फीवर करके टेम्परेचर बढ़ा के कोरोना को मारना चाहता है, आप मारने ही नहीं देते। तो क्यों क्रिमिनल बना दिया आपने अपने शरीर को? लाखों सालों से तो जिंदा रखा है इसने। 100 साल पहले तो किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो हमको देखना पड़ेगा। स्टेनोसिस का मतलब होता है हार्ड हो जाना। इसके कई रीजन, इसको मैं घंटों बात कर सकता हूं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन क्या है कि बात करने से सोल्यूशन नहीं मिलता। अब मुझे एक बात बताइए, आपके आसपास में पानी कितना है? जमीन के नीचे पानी कितना दूर चला गया? फ्रॉम 20 फीट, 50 फीट टू 5000, 10,000 फीट। नदी नालों में पानी है, तालाब है आपके पास में, सरोवर कहां गए आपके? सब सूख गए। आपके आसपास से पानी सूख गया, आपका शरीर नहीं सूखेगा? आपको तो पता नहीं चल रहा, मगर शरीर भी सूख रहा है। आप सोचते हैं बाहर पानी नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो मिल रहा है। नहीं, आपका शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा पानी। जब तक बाहर पानी नहीं होगा तब तक आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा पानी। तो स्टोन्स हो रहे हैं ना आजकल बहुत ज्यादा, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, दिस स्टोन, दैट स्टोन। कॉन्स्टिपेशन कितने लोगों को? ड्राइनेस ही तो है कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स कितने लोगों को? कॉन्स्टिपेशन की वजह से। इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द कितने लोगों को? हर एक को दर्द है। ड्राइनेस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन दर्द इन्फ्लेमेशन से होता है, जॉइंट से नहीं होता, गैप में आने से दर्द नहीं होता। नहीं तो अष्टावक्र महाराज तो चल ही नहीं पाते। जॉइंट या टेढ़ेपने से दर्द नहीं होता है, गैप आने से दर्द नहीं होता है। हड्डी टूटी भी, वो चकनाचूर हो गई एक जगह पे, दर्द नहीं होता उससे। डिसलोकेटेड जॉइंट से दर्द नहीं होता। कई लोगों के कंधे डिसलोकेट हो जाते हैं, वो फिर ठीक कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन से, ड्राइनेस से होता है। सूखेंगी चीजें, मसल सूख रहे हैं, स्टेनोसिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्टेनोसिस कहते हैं। रीजन आपको पता चल गया अब क्या हो रहा है? रीजन पता चला क्यों स्टेनोसिस हो रहा है। बट उसके बावजूद भी इफ यू हैव द राइट दोष बल। दोष बल क्या होता है? आपको कोई धक्का दे तो आप अपने आप को कितना संभाल सकते हो, वो स्ट्रेंथ, अपने आप को संभालने का स्ट्रेंथ। तो अगर आपका संभालने का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो कोई धक्का थोड़ा देगा ना तो आप संभल जाओ। तो आपको पूरा एनवायरनमेंट धक्का दे रहा है, आपके शरीर को इंबैलेंस कर रहा है। आपने बढ़ाया अपना बैलेंसिंग स्ट्रेंथ? आपने तो बढ़ाया नहीं, एनवायरनमेंट तो खराब कर दिया बड़े मजे से। फसल खराब कर दी, अनाज खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, हवा खराब कर दिया, मगर बैलेंसिंग फैक्टर तो बढ़ाओ कम से कम, तभी तो अच्छे से जिएंगे। तो वो बढ़ाने पे फिर ये सॉल्यूशन मिलेगा। सर्जरी के कोई सॉल्यूशन है क्या इसका? सर्जरी कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक जगह आप फिक्स करोगे, दूसरी जगह खराब हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ कम हो गया है।